Now, in the Learn from the Master series, as I had outlined to you in my introductory lecture, we will be taking up 30 classes, only 30 classes in Indian polity, or rather in your section which deals with polity, public administration and good governance, and democracy at the grassroots level, grassroots functioning, right. So, this is for your JPSC paper 1. Broadly we call it polity section, and in this polity section there are 10 marks. Out of the 10 marks, Indian Constitution, there is an allocation of 4 marks for this. Then we have public administration and good governance. Good governance. There are 4 marks for this, and local administration, which encompasses democracy at the grassroots level, that is Panchayati Raj, and municipal bodies. Two marks for this. Okay. So, friends, these are the 3 broad segments in which we deal the polity of India. भारत का संविधान, नागरिक प्रशासन, अच्छा या ये कह लीजिए कि उचित प्रशासन और धरातल की संस्थाएं, जिसको कि पंचायती राज या म्युनिसिपल बॉडीज कहा जाता है। अब सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन it is a political covenant, a broad body of aspects of the ideological and governmental moorings of our country after we gained independence. इसका पहला सब टॉपिक जो बनता है, as you know, the Indian Constitution is a sacrosanct incorporation of ideals and ethics of proper governance of the country.
the first subpart of the study of our constitution is definitely the features of our constitution. Features of our constitution. दोस्तों, our constitution is the lengthiest constitutional written constitution in the world. ठीक है, तो पहली चीज तो ये बनती है कि इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव political legal document incorporating diverse elements of governance. The longest written constitution in the world. In the world. It is 5 times as long as the Constitution of the United States of America. और जैसा मैंने कहा, it is an all-embracing, all-incorporating document concerning the various political legal aspects of governance. अब दूसरी बात पर आइए. सेकंड फीचर. दोस्तों, एक बड़ा मजेदार अफसाना आपको मैं सुनाता हूं. एक फॉरेनर दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक किताब की दुकान पे गया और वहां किताब की दुकान पे जाके उसने काउंटर पे पूछा, बोला, गिव मी अ कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान की एक प्रति हमको आप दीजिए. दुकानदार ने उसको देखा और कहा कि सर, वी सेल बुक्स नॉट पीरियोडिकल्स. महोदय, हम लोग किताब बेचते हैं, पत्रिकाएं नहीं. और ये बड़ा ही तीखा कटाक्ष था, क्योंकि वो संविधान जो कि हर दूसरे तीसरे महीने संशोधित होता हो और उसकी नई प्रति इशू होता हो, वो संविधान तो एक पत्रिका ही कहा जाएगा. लेकिन हमारे संविधान की मजबूरी है, क्योंकि वी आर अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का हमारी संस्कृति है. और हमारे संविधान को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालना पड़ता है. और देश के विभिन्न लोग, संस्कृति, संस्थाएं को कैटर करने की वजह से इसमें लचीलापन तो लाना जरूरी है. ठीक है, तो द फैक्टर्स बिहाइंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी आर मैनीफोल्ड. अभी मैं डिटेल करूंगा. ठीक है ना. So the second important thing is that the Indian Constitution is highly flexible. Indian Constitution is highly flexible.
whereas the American Constitution in 248 years of its functioning has only been amended about 35 times. The Indian Constitution in 74 years of functioning has been amended over 130 times. ठीक है? The American Constitution, it was adopted by the Philadelphia Declaration of 1776 on the 4th of July 1776. जबकि ये घोषणा किया था 13 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने that we the people of America do hereby acknowledge that all men are born equal and are endowed among other things the right to life, liberty and the pursuit of happiness. ठीक है? तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा, फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन, देखिए मैंने पहले ही बताया ये सुप्रीम एग्जामिनेशन है, कमीशन का एग्जामिनेशन है, ये JPSC वगैरह का एग्जामिनेशन नहीं है कि कुछ भी चल जाएगा. You have to be very thorough with your knowledge and your knowledge has to be very diversified. है ना? बहुत बड़ा आपका मानस पटल होना चाहिए, है ना? प्लीज़. और हमने कहा ना कि 30 क्लासेस में लूँगा और लगभग सब क्वेश्चन इसमें फंस जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, है ना? नाउ तो Philadelphia Declaration, it was adopted on the 4th of July 1776 and since then 248 years have passed और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बामुश्किल 34-35 बार अमेंड हुआ है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में अडॉप्ट हुआ और अब तक 74 वर्ष बीते और ये मान लीजिए कि 130 बार के ऊपर ये संविधान संशोधित हो चुका है. Now, what are the causes for the great flexibility of the Indian Constitution? क्या ये ऐसे ही बन गया कि क्या इसको जान के हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन ने बनाया? तो एकदम निर्विवाद रूप से ये मान लीजिए कि इस लचीलापन को जान के हमारे संविधान के अंदर निरूपित किया गया है. हाँ, ताकि इलास्टिसिटी अगर फंक्शनिंग में होती है सिविक इंस्टीट्यूशंस के, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस के, तो कभी भी बॉडी पॉलिटी रप्चर नहीं होता है, टूटता नहीं है, खंडित नहीं होता है, उसमें ऑटो एडजस्टमेंट की एक प्रवृत्ति आ जाती है. ठीक है? तो नाउ रीजंस बिहाइंड the great flexibility of our constitution. ठीक है? सबसे पहला रीजन
Ours is a country of unity in diversity. A plethora of languages, cultures, races, caste, color, creed and people. अब इन सब की प्रोपेंसिटीज को सेटिस्फाई करना है एक ही संविधान के अधीन, तो जाहिरी तौर पर इसमें लचीलापन तो लाना ही पड़ेगा. Ours is a country of unity in diversity. Diverse cultures, languages, peoples, etc. सबको सेटिस्फाई करना है. सेकेंड, आवर्स इज अ डेवलपिंग कंट्री undergoing the rapid vortex of change, political, economic and social. तो इनकी भी प्रोपेंसिटीज को सेटिस्फाई करना है. रैपिडली डेवलपिंग and transforming country. Undergoing rapid political, economic and social changes. ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हैं. देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो भाई अगर आप समझे नहीं रहेंगे तो आप फंस जाएंगे. कोई भी चीज पढ़िए, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होना चाहिए. क्यों ऐसा होता है? तो ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बहुत तेजी से देश परिवर्तन कर रहा है. And institutions, cultures, they are very rapidly changing and then to adjust to that changes, it is very, very important to make the constitution flexible. तीसरा चीज जो हमारे संविधान के बारे में है, our constitution, is evolutionary. And not revolutionary. जैसे कि डॉक्टर सुन यात सेन ने मिंग डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया और रातों रात संविधान तैयार कर दिया. पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने देख रेख में एक नया संविधान पाकिस्तान के लिए तैयार कर दिया. ऐसा भारतीय संविधान नहीं है. भारतीय संविधान प्रत्यक्ष तौर पे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू होता है. इसके बाद you have the Pitt's India Act of 1784, then you have the Declaratory Act of 1786, the Adjudicature Act, then you have the Charter Act of 1793, Charter Act of 1813,
Charter Act of 1833 and Charter Act of 1853. Then you have the Act of 1858, where the governance rights of the Indian territories passed on from the East India Company to the British Crown. Then you have the Indian Councils Act of 1861. हम लोग डिटेल में हर चीज़ करेंगे, घबराइएगा मत. And then the Indian Councils Act of 1892. Then the Indian Councils Act of 1919, which is popularly known as the Minto Morley Reforms. Then the Government of India Act of 1919, which is popularly known as the Montagu-Chelmsford Reforms. And finally the Government of India Act of 1935, which was a prelude to the independence of the country. तो देखिए ये एक लंबा एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. कितना लंबा प्रोसेस हो गया. 18th सेंचुरी का 1/4, 19th सेंचुरी पूरा और इसके बाद 20th सेंचुरी का आधा. तो लगभग 175 साल तक तो ये एक्टिवली इवॉल्व किया है. इसके अलावा संविधान में हमारी बहुत सी अवधारणाएं हैं जो कि हमारे प्राचीन भारत से ली गई हैं. तो कहने का मतलब है कि इट इज अ सिंथेटिक, ऑर्गेनिक and evolutionary legal document. It is a synthetic, organic and evolutionary पॉलिटिको लीगल जुडिको डॉक्यूमेंट. ठीक है, सिंथेटिक, ऑर्गेनिक एंड एवोल्यूशनरी. फ्रेंड्स, चौथा जो फीचर हमारे संविधान का है वो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग है. देखिए, यूं तो कहा जाता है कि हमारे संविधान में केंद्रीय सत्ता को ज़्यादा ताकत दिया गया है और राज्य के सरकारों को कम ताकत दिया गया है. दैट इज, इट इज मोर centrist, unitary and less federal. लेकिन जो महान ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट और लीगलिस्ट W.C. वियर थे, उनका स्टेटमेंट बड़ा पॉजिटिव है और पॉपुलर भी है. और दोस्तों, कम से कम 3 बार तो ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है. एक बार UPSC प्रीलिम्स के पेपर में, एक बार BPSC के प्रीलिम्स के पेपर में और एक बार उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विसेज कमीशन के पेपर में. ये स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करें. ये चौथा फीचर है हमारे संविधान का. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is federal in form and unitary in spirit.
इन स्पिरिट। ये W.C. वियर का बहुत फेमस स्टेटमेंट है। उनका ये मानना है कि बनावट से, स्वरूप से तो हमारा संविधान संघात्मक है। मतलब जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कभी अमेरिकन पॉलिटी के बारे में कहा था, अ नॉन डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो मजबूत केंद्रीय सत्ता और मजबूत राज्य सत्ता। तो बनावट से तो हमारा संविधान ऐसा ही है, लेकिन यथार्थ में हमारा संविधान ज्यादा केंद्र शक्ति की तरफ झुकता है। केंद्रीयकरण की प्रवृत्तियां यथार्थ में, व्यवहारिकता में बढ़ जाती हैं। द कॉजेज फॉर द ग्रेटर सेंट्रल अथॉरिटी इनहेरेंट इन द पॉलिटी ऑफ इंडिया आर, क्या क्या कॉजेज हैं? हाँ? Central authority inherent in the polity of India are क्या क्या? First, all India civil services, all India police services, all India services, forest services, तो सिविल, पुलिस, रेवेन्यू, फॉरेस्ट, ये सब ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, इससे ये केंद्रीय सत्ता को मजबूती मिलती है। IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, एटसेट्रा। पहली चीज ये। सेकेंड, a strong and centralized डिफेंस। अब इसमें क्या है? आर्म फोर्सेस, मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक। तीसरा चीज, अ सेंट्रलाइज्ड जुडिशरी। सब कुछ के अलावा अंतिम निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड जुडिशरी। फोर्थ, a centralized all India taxation and revenue system। taxation, revenue and finance system। पांचवा, अ सेंट्रलाइज्ड बैंक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट।
एंड छठा नेशनल सिटीजनशिप, सिंगल नेशनल सिटीजनशिप। अमेरिका में जैसे स्टेट्स के लिए अलग सिटीजनशिप होता है, वो इंडिया में नहीं है। सिंगल नेशनल सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये सब चीजें सेंट्रल पावर को, सेंट्रल अथॉरिटी को ज्यादा मजबूती देती हैं। Even institutions like the Finance Commission of India, Comptroller and Auditor General of India, they are all skewed in favor of the central authority. और जो लास्ट एस्पेक्ट है वो ये है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was one of the earliest written constitution written constitution in the third world. Asia, Africa, and Latin America. Friends, our constitution, it reflected the spirit of our freedom movement. जिन आदर्शों पे हमारा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन reflected the spirit of our freedom movement. जिन आदर्शों पे हमारा अद्वितीय स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया उनको रिफ्लेक्ट करता है, ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट। नॉन वायलेंस, ब्रदरहुड, म्यूचुअलिटी, ality, and coexistence. And finally, as our preamble says, our constitution reflects India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ये बेसिक नेचर है जो कि हमारे प्रियम्बल में है। As our preamble says, the Indian Constitution reflects our country as a sovereign,
socialist, secular, democratic republic. Sovereign, socialist, secular. So these are the features of our constitution. दोस्तों, every lecture which I take in paper 1 is of great importance to you. Please, आप देखेंगे जब एग्जाम्स देंगे तो कितने इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, राइट. फ्रॉम हियर ऑन वी ग्रेजुएट टू द सेकेंड सब टॉपिक विच वी हैव टू स्टडी. ज़्यादा हम लोग को समय नहीं बर्बाद करना, हमने पहले ही कहा लिमिटेड टाइम है. वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड इन द स्पैन ऑफ 30 classes I want to get it across to you everything that is important to you, so that when you sit in the examination hall you are equipped with proper information level, right. So the second important subtopic are the sources of the constitution. Sources of our constitution. फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एवोल्यूशनरी. समय के साथ ये तमाम जो चीज़ भी उसको आत्मसात करना था इसने करते गए. तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेस. सबसे पहले आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम विच इज नोन एज द वेस्टमिंस्टर सिस्टम of parliamentary democracy has been borrowed from Great Britain. Our parliamentary system which is known as the Westminster system of parliamentary democracy has been borrowed from Great Britain. ठीक है, तो it has been borrowed from Great Britain. The Westminster system of parliamentary democracy, ये दिमाग में रखिएगा, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को कहा जाता है. ठीक है. आवर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, ऑफिशियलडम which is known as the White House system has again been borrowed from Great Britain. Our bureaucracy officialdom which is known as the White House system has been borrowed
from Great Britain. ठीक है, the White Horse system. Right? Friends, coming to fundamental rights, the fundamental rights. The cornerstone of liberty, as we call it, the basic structure on which civil rights and constitutional privileges exist, this has been borrowed from they are based on the Bill of Rights of the Constitution of the USA. Based on the Bill of Rights of the Constitution of the USA. अब ये बिल ऑफ राइट्स क्या है दोस्तों? जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1776 में, तो सच पूछिए तो उस समय ऑलरेडी यूएसए ब्रिटेन के खिलाफ अपना स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था। ब्रिटेन अभी भी अमेरिका में कब्जा किए था और फाइनली जब 1781 में लॉर्ड कॉर्नवालिस एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस इन अमेरिका, पहले याद रखिएगा वो अमेरिका में ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, बाद में वो इंडिया गवर्नर जनरल बन के आए। तो व्हेन लॉर्ड कॉर्नवालिस सरेंडर्ड इन द आफ्टर द बैटल ऑफ यॉर्कटाउन, जिसको यॉर्कटाउन सरेंडर कहा जाता है, तो सही मायने में अमेरिका 1781 में इंडिपेंडेंट हुआ और अमेरिकी संविधान को 1790 से लागू माना जाता है। उस समय अमेरिका के फेडरल चीफ जस्टिस, अमेरिका के सेंट्रल मतलब हाईएस्ट कोर्ट को फेडरल कोर्ट कहा जाता है, अमेरिका के फेडरल चीफ जस्टिस जस्टिस जॉन मार्शल थे। तो संविधान जब प्रक्रिया में आया तो उसमें बहुत सी कमियां थीं और इन तमाम विसंगतियों पर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में या फेडरल कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया। उन तमाम मुकदमों में जस्टिस जॉन मार्शल ने अपने निर्णय दिए। अब इन तमाम निर्णयों को संकलित करके अमेरिकी संविधान के पहले 10 संशोधन पारित किए गए, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और उन पहले 10 संशोधन जो कि जस्टिस मार्शल के जजमेंट्स पर आधारित थे, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो उन्हीं पहले 10 अमेंडमेंट्स पर, जो कि बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, हमने अपना फंडामेंटल राइट्स को बेस किया है। ठीक है ना, बेस्ड ऑन द बिल ऑफ राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। अब बिल ऑफ राइट्स क्या है? The Bill of Rights are the first 10 amendments of the American Constitution carried out in the aftermath of the
of the judgments of Justice John Marshall, the first Chief Justice of the Federal Court Supreme Court of the USA. The Bill of Rights, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स ये दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कार्ड आफ्टर मार्थ ऑफ द जजमेंट्स ऑफ जस्टिस जॉन मार्शल. इसको मार्शल अमेंडमेंट्स कहा ही जाता है. द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कोर्ट ऑफ द यूएसए. तो इसी तरह हम लोग का फंडामेंटल राइट्स का सृजन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो फ्रेंड्स, वी आर नियरिंग टाइम नाउ. फिर मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, ये जो लर्न फ्रॉम द मास्टर सीरीज़ है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक बार देख लीजिए हर चीज़ को, और आप देखें कितना आपके लिए लाभप्रद एग्जामिनेशन में होता है. क्योंकि मैं पहले कह रहा हूँ कि इतना वास्ट सिलेबस है, अथाह सिलेबस है, कि आपके अपने बस में नहीं है कि वो हर चीज़ आप कवर कर ले जाएं satisfactorily. You need a mentor, you need an experienced person, you need a person who has had his baptism by fire. मैं खुद भी एक क्लास 1 ऑफ बैंक ऑफिसर रह चुका हूँ. तो आपका रास्ता सुलभ और आसान हो जाएगा. What I am doing presently, इसका प्रतिफल आप तब रियलाइज करेंगे जब प्रीलिम्स का रिजल्ट निकलेगा. तो with this, I thank you for the class. Have a nice time. Good day. Thank you.